Hello everyone. Today we shall talk about soil classifications. इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे What are the purposes of soil classifications? The first purpose is to identify and keep the soils in a particular group showing similar characteristics, similar attributes. The next point, to identify the certain soil type that is best suited for a given application. Suppose we want to use the soil for a particular purpose. For example, for the filter. As you know, filter we can use the wastewater treatment plant, water treatment plant. So which type of soil will be suitable for that applications, right? This also comes under the purpose of soil classification. To assess the fertility of soil for a crop from agriculture point of view, whether soil is fertile or not, that can be found out by testing the soil from the agriculture point of view. The next is to assess the suitability of soil from engineering point of view for the construction of dams, highways, foundations. Suppose you want to construct the highways. In that case, we have to know whether soil is well graded, right, or not. If soil is not well graded, in that case, definitely the soil, that means the subgrade materials, will not be suitable. In that case, we have to make the soil well graded. That means we have to go for particle size analysis. So from engineering point of view, also we have to classify the soil. Now we can see from the engineering point of view, what are the different classification of soil. The first classification we can carry out according to particle size. The next, textural classifications. Third is the unified soil classification. Fourth, Indian standard classification. And fifth is the Highway Research Board classification. So we shall discuss one by one about all the classifications. We can see here classification of soil according to particle size. The first one is the US Bureau of Soil or Public Road Administration System of United States. What it says that you can see depending upon the soil, the soil has been classified. You can see less than 0.005 millimeter. Then it will come under the clay categories. In between 0.005 to 0.05, it will come silt-sized particles. 0.05 to 0.01, 0.10, very fine. Then from this range to this range, fine, medium, coarse. So this comes under the sand category. 1 mm to 2 mm, fine gravel. More than 2 mm is the gravel category. So according to the size, these are the sizes. According to the sizes, the US Bureau of Soil Classification has been carried out. The next we can see, according to the size, international classifications. Here we can see the ultra clay, that means the clay particles less than 0.0002 mm is called as clay particles, and 0.0002 to 0.0006 के बीच को फाइन क्ले कहते हैं, राइट, फाइन क्ले, कोर्स क्ले, right, fine, coarse, right, and you can see the different sizes are there. 0.002 mm to 0.006 को fine silt कहेंगे, 0.006 to 0.02 mm को coarse silt, we can say coarse silt. So this is the international classification according to particle size. 0.002, 0.05, again fine. C, coarse, that is 0.05.1. You can see here MO Majala. Majala MO is a Swedish term used for glacial silts or rock flows having little plasticity. Glacial silts
silt deposit by the glaciers and which will have little plasticity are called as Mazla or Emo. It is a Swedish term. So this is the second, which is the international classification. The third is the MIT classification, Massachusetts Institute of Technology. We can see the sizes 0.0002. Less than this size is called as clay particles. 0.002 in between 0.006 fine silt, medium silt, coarse silt. The three categories have been given according to the particle size. Here we can see fine, medium, coarse sand has also been given for the different sizes, and more than 2 mm is called as gravel. So this is called a MIT classifications. The next we can see the Indian Standard Soil classification. It is based on the MIT system, which we have seen just now in the previous slide. Here we can see that the IS classification, Indian Standard classification, less than 0.002 mm particle size is called as clay particles. 0.002 mm to 0.075 mm, or we can say 2 micron to 75 micron sizes is silt particles. 0.075 to 0.25 fine sand. 0.425 to 2 mm medium sand. 2 mm to 4.75 mm coarse sand, and 4.7 mm to 20 mm is called fine gravel. 20 mm to 80 mm is coarse gravels. 80 to 300 mm cobbles. More than 300 mm को boulder कहते हैं. So what I am trying to say here, soil classification according to particle size. So these are the sizes. Based on the sizes, the soil has been classified. So this is the first classification which we discussed. Now we shall go for the next classification, which is called a textural classification. You can see this figure. It is equilateral triangle, right? Its name is textural classification chart, adapted from US Bureau of Administrations. You can see the one side sand is there, another side clay, or at the base silt is there. In brackets, sizes are also given. That means the sand, clay or silt. Normally we see in the practice, in the soil, sand, silt और clay size particles ज़्यादा मिलते हैं. मिट्टी में हम लोग देखते हैं sand, silt और clay ज़्यादा होता है. The textual classification is the triangular classification of US Bureau of Road Administrations. This classification is based on the percentage of sand, silt and clay size making up the soil. Soil constituents जो है, soil में यदि sand कितना परसेंट है, silt कितना परसेंट है, clay size कितना परसेंट है, उस आधार पर इस चार्ट के जरिए हम बता सकते हैं कि in which categories or we can say what is the type of soil, whether it is clay or sandy clay, in which zone we are going to get the values. According to the zone, we can give the name of the soil. Sandy clay loam, clay loam, silty clay loam. You can see the different zones are there. Suppose the soil which you have collected, in that soil, suppose 30% sand is there, 30% silt is there, 40% clay size particle is there. In that case, what we shall do? 30% sand. इस लाइन पर हम लोग 30 मार्क करेंगे and we shall draw a parallel line, right? यहाँ से parallel line draw करेंगे इस लाइन के parallel. We shall draw a line parallel to this line, right? Similarly, for 30% silt, there you can see 30% silt. We shall draw a parallel line with respect to this line, right? Similarly, for 40% clay size particles, you can see 40%. We shall draw a line parallel to the base from here. Now we can see it going to these lines, these points are, once you are going to draw the parallel line, these lines are going to cut at point E. That means it comes under the
क्ले कैटेगरी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉइल क्लेई सॉइल है, राइट। दिस इज द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन. Now the third classification we shall discuss, which is called as unified soil classification. The unified soil classification was developed by A. Casagrande and adopted by the US Corps of Engineers in 1942 as airfield classification. Airfield constructions के लिए इसका इस्तेमाल 1942 में किया गया था, राइट. बाद में इसका रिवीजन किया गया और now it was made it generalized or universal, right, for different purposes, for different uses. For example, foundation, earth dam, earth canals, earth slopes, सबके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले एयरफील्ड के लिए ही इस्तेमाल होता था, बाद में in the year 1957 unified soil classifications, right, was used for the different purposes. Foundation, earth dams, earth canals, for any types of work, civil structures, we can use this soil classification system. So unified soil classification system has been further classified into parts: fine grain soils and coarse grain soil. Now we shall see the fine grain soils. For fine grain soils, what it says that if more than 50% of the soil sample passing through 75 microns IUC. Suppose you are going to collect this soil sample 500 gram, 500 ग्राम सैंपल लेकर के आप 75 माइक्रोन IUC से सीव कराते हैं, और if more than suppose 80% soil is going to retain on this 75 micron sieve, 80% of 500 gram, that means 400 gram, 400 ग्राम उस पर रिटेन करता है. In that case we can say coarse grain soil, but यहाँ क्या कह रहा है कि more than 50% passes. Suppose 80% is going to pass, 80% is going to pass means 400 ग्राम पास कर जा रहा है, तो 100 ग्राम सिर्फ बच रहा है, तो ज्यादा मोर देन 50% से अधिक पास कर रहा है. उस स्थिति में हम लोग उसको फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे. और वहीं कोर्स ग्रेन सॉइल कब होगा, जब 400 ग्राम यानी मोर देन 50% इज गोइंग टू रिटेन on this 75 micron IUC. So we shall use this chart for this soil classification, fine grain soil classifications. Classifications में हम लोग नाम देते हैं, soil का नाम देते हैं, कौन तरह का soil है, that I will also tell you. See, fine grain soil normally includes silt, clay, organic soil. O is also there. See, silt M, C, O. It is indicated by the M, C, and O. So Casagrande chart, you can see this is the Casagrande chart, which has been plotted in between liquid limit and plasticity index. दोनों का, suppose you are going to have a two sets of data, one sets for the liquid limit, another sets for the plastic limit. That is the meaning. So these two, actually Casagrande has developed this chart, right? And what it says that there are two lines are there on this chart. अब दो लाइन इस पर देख सकते हैं. One line is called A line and another line is the vertical line. A line, Casagrande line. So A line, Casagrande has given the formula. IP is nothing but plasticity index is equal to 0.73 into liquid limit minus 20. This is the A line equation, right? We can see what are the application of these two lines. जैसे हम लोग देखा कि वर्टिकल लाइंस है और यहाँ ए लाइंस है. ए लाइंस के नीचे जो भी सॉइल है वो सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल है. एम देखिए वो है, और ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है वो सब क्ले है. ये हम लोग लिख सकते हैं. एबोव ए लाइन द क्ले सॉइल्स आर देयर, below A line the silt and organic soils are there, right? We can see that here dual names are also given here. Liquid limit 4, here 7 के बीच जो है, this hatch line CL-ML is called a dual soil. नीचे ML है
इसके ऊपर Cl है. Cl means low plastic soil. So L indicates low plasticity, H high plasticity. Cl means inorganic clay of low plastic clay, or we can say low plastic clay. OH organic silt or clay of high plasticity, or we can say high organic soil, high plastic organic soil, right? Ml low plastic silt, high plastic silt, MH. Cl low plastic clay, CH high plastic clay, OL low plastic organic soil, high plastic OH high plastic organic soil. तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ कि two lines as I told you. Below A line, the silt and organic soils are there. Above A lines, the clay lines are there. Another vertical lines are there. The vertical lines, what it indicates, what the Casagrande has said here, that above 50%, the soil comes under the high plastic category. You can see here, जहाँ H लगा हुआ है सब में. H का मतलब ये हुआ कि high plastic category. When the liquid limit is more than 50%, we can say the soil comes under the high plastic category. If less than 50%, it comes under the low plastic category. Okay. So this is the significance of these vertical lines and the A lines. So this we can also write in our examination. So fine grain soil. So this chart also you have to keep in our mind when we are going to discuss about the unified soil classification for the coarse grain soil. So let us see this next line. What it said, the soils are classified in accordance with the name of the segment in which the points lies. जैसे आप जो डाटा कलेक्ट किया, डाटा means for a certain or for a particular soils you have determined the liquid limit or plasticity index. So whatever the value you have got, suppose your value is coming with 30, liquid limit you have got 30, right? And plasticity index you have got 25. So what we shall do, 25 and 30, we shall get 1 point here. So what we can say, the soil comes under the low plastic clay. Cl categories में हमारा soil आएगा, Cl, right? Because the point is coming at this here, right? Now we can see coarse grain soil. As I told you in the beginning, if more than 50% of soil is retained on 75 micron C. जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, फिर एग्जाम्पल को मैं रिपीट करना चाहता हूँ. आप 500 ग्राम सॉइल लिया है और उसमें 80% सॉइल रिटेन कर जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 75 माइक्रो साइज पार्टिकल सी पर रिटेन कर जा रहा है. तो रिटेन करने का मतलब क्या है कि कोर्स ग्रेन सॉइल होगा, बिकॉज मोर देन 50% सॉइल इज गोइंग टू रेट 400 ग्राम रिटेन कर रहा है तो 100 ग्राम पास कर रहा है, तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा. यदि अगर 400 ग्राम 80% पास कर रहा है, 100 ग्राम रिटेन कर रहा है, तो उसको फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे, जैसा पहले मैं बताया था. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोर्स ग्रेन सॉइल यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम for as it has been divided into parts, the fine grains and coarse grain soil. Here some symbols are given that we have to also know. G का मतलब gravels, S मतलब sand, M means silt, C is the clay, W indicates well graded, P indicates the poorly graded soil. Now we can see this chart. We have to understand this chart. आप देखेंगे ये चार्ट जो है, ये टेबल जो है दो पार्ट में बटा हुआ है. यहाँ से दिस द ग्रेवल कैटेगरीज एंड सैंड कैटेगरी. तो ऊपर का जो पार्ट जो है ग्रेवल कैटेगरीज के लिए है और नीचे का पार्ट सैंड कैटेगरीज के लिए है. और ये परसेंटेज ऑफ फाइन्स जो 3 दिए हुए हैं ये सबके लिए कम है. ठीक है, तो हम लोग अगर आधा पार्ट ऊपर का पार्ट समझ जाते हैं तो नीचे का पार्ट जो है दिस पार्ट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली. सो लेट अस डिस्कस. You can see here one by one major division. Coarse grain soil, as I told you in the beginning, or as per definition, more than 50% retained on 75 micron C. More than 50% retained is a coarse grain soil. So further this soil, that means as per the example 400 gram soil, right, 400 gram soil. So that soil is further classified in two parts. What is this part and another part? What it says that if that 400 gram
right? That means 80% of soil. You are going to sieve further using the 4.75 mm sieve, right? So what it says here, if 50% more retained on this 4.7 sieve, so that is called as that soil is called as gravel. उसको gravel हम लोग करते हैं, right? If more than 50% of this soil is going to pass through this 4.75 mm sieve, that comes under the sand category, right? अब ये दो पार्ट में हो जाता है, 50% से अधिक रिटेन कर गया तो उसको हम लोग ग्रेवल कैटेगरी में रखते हैं, और 50% से अधिक पास कर गया तो उसको सैंड कैटेगरी में। तो आइडिया आगे फर्दर देखें, क्लीन ग्रेवल और ग्रेवल विथ फाइन्स दो पार्ट में बटा हुआ है। क्लीन ग्रेवल्स further it is divided to two parts, clean gravel GW, GP. GW, the clean gravel GW, well graded gravels, GW means well graded, और PG GP means poorly graded gravels. तो इसको दो पार्ट किया गया। Then gravel with fines, right? Gravel with fines GM और GC. सिल्टी ग्रेवल्स M सिल्ट को कहते हैं, G ग्रेवल को कहते हैं, सिल्टी ग्रेवल्स, क्ले ग्रेवल्स, GM GC दो पार्ट हमने कर दिया। Next we shall proceed further. You can see here three names are given there. If you are going to sieve this soil, okay, these soils which you are going to sieve further, you can see here less than 5% passing 75 microns GW GP. हम लोग इस सॉइल को जो तीन ग्रेवल कैटेगरीज में है, इसको अगर हम फर्दर 75 माइक्रो सीव से पास कराते हैं और लेस देन 5% पास करता है, उससे जो व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ सॉइल इज देयर, इफ इट इज गोइंग टू पास लेस देन 5%, तो उसको हम लोग GW GP कैटेगरी में रखते हैं। ये भी इसको ध्यान रखना है सीविंग के समय। और SW SP दिस कम्स अंडर फॉर दिस सैंड कैटेगरी। नेक्स्ट लाइन इज मोर देन 12% पासिंग 75 माइक्रो सीव, तो GM GC होगा, बिकॉज ग्रेवल विथ फाइन्स 12% से ज्यादा पास करता है 75 माइक्रो सीव, तो उसमें GM GC हम कैटेगरीज में रखेंगे। और इस कैटेगरीज के लिए SM SC का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा कंडीशन है, इफ द soil, if this soil, this soil, this soils and these soils, right? If this soil 5 to 12% passing 75 micron sieve, in that case we can use the dual name GW GM SP SC GM dual name हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉइल का नाम जो है हम GM रखें, GC रखें, GW रखें, GP रखें। These are the classifications, these are the nomenclatures, हम लोग नाम इसको रख सकते हैं। Further we can see here GW well graded soil, well graded we have already studied the particle size distribution curve, how we can calculate the coefficient of uniformity and coefficient of curvature. As we know, CU coefficient of uniformity is D60 by D10, right? And coefficient of curvature is equal to D30 square divided by D60 into D10. So using the particle size distribution curve, we can also plot the graphs, right? Particle size distribution curves, we have already studied that it is drawn for the coarse grain soil, right? So CU calculate करते हैं, CC calculate करते हैं. Suppose this condition, if CU is coming greater than 4, that means 5, and CC is coming in between 1 and 3, then this GW name can be given for that soil, well graded soil. यदि ये मीट नहीं करता, सपोज CU 3 आ जाता है तो और CC 1 और 3 के बीच ही रहता है, तो उसको poorly graded हम करें, poorly graded gravels, right? Here we can see three things are there. This at adverse limits below A line or PI less than 4. At adverse limit, this now we have to keep in our mind the chart given by the Casagrande, right? So A lines अगर के नीचे यानी PI less than 4 है, जो Y axis पर, as we know that on Y axis plasticity index and on the X axis liquid limit is there.
So pi less than 4, so in that case we can say silty gravels, GM. उस सॉइल को हम लोग सिल्टी ग्रेवल्स कैटेगरी में रखेंगे, GM नाम देंगे इसका। बट यहाँ देखिए GM किसको है, मोर देन 12% पासिंग 75 माइक्रोन सीव, ये भी बात ध्यान रखना है, तभी इस सॉइल को हम सीव करेंगे। अगर अधिक पास करता है तो 12% से अधिक पास होना चाहिए और पीआई लेस देन 4 होना चाहिए, तब उसको GM हम करें। उस तरह से इफ पीआई लेस देन ग्रेटर देन 7, इन दैट केस वी कैन से इट एज ए GC also the same category, more than 12% passing through the 75 micrometer, here also we can see. तो ये है GM के लिए, ये GC के लिए। Now we can see sometimes the condition also happens, the soil passes from, suppose the A line, if PI between 4 and 7, 4 और 7 के बीच में है, so in that case dual name can be given, GM dash GC we can give, okay. So the same ideas whatever we discuss now can use for the sand categories, right? Now we shall proceed further. Now we shall come for the Indian standard classification, fourth one. See, the Indian standard classification uses the same table or the same chart which has been developed by the unified soil classification system, especially for the coarse grain soil. Coarse grain soil के लिए जो यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वही क्लासिफिकेशन सिस्टम इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के लिए लागू होता है, बट सम डिफरेंस इज देयर इन द प्लास्टिसिटी चार्ट. That plasticity chart, as we know, in case of US soil classification system, has been developed by the Casa Grande. Here, this chart has been developed by the Indian Standard Soil Classification, IS. So, what is the difference in between both the charts we shall discuss now. While UCS identified only high and low plastic categories, हम लोग देखे थे कि यूएस यानी यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कासा ग्रांडे प्लास्टिसिटी चार्ट है, उसमें लिक्विड लिमिट को 2 पार्ट में बांटा गया है, लेस देन 50%, वन वर्टिकल लाइन इज देयर, लेस देन 50% एंड मोर देन 50%, राइट. ओनली मोर देन 50% हाई प्लास्टिक सॉइल और less than 50% low plastic soil, that we have discussed in Casa Grande chart. But in case of IF classification, it defines in 3 different zones. In Casa Grande chart, 2 zone, less than 50% liquid limit, more than 50% liquid. In case of IS classifications, 3 zones are there. We can see all the 3 zones. The one zone, you can see 35% liquid limit at 35%, another is the liquid limit at 50%. So less than 35% is called a low plastic soil. In between 35% and 50% it's called as intermediate soil or medium plastic soil, medium soil, right? More than 50% high plastic soil, right? So you can see 3 categories: less than 35%, in between 35 and 50, 2 vertical lines are there, and more than 50. So 2 vertical lines and this A lines. So as I told you that below A line, the silt and organic soil is there. Above A line, the clay is there. But the vertical lines indicates whether the soil is low plastic category, intermediate plastic category, or high plastic category. So these are the things. Nomenclature is also given there. Y means intermediate organic soil, कह सकते हैं. OI organic soil या intermediate, OI I is there. CI intermediate clay soil you can see, CI, right? Intermediate means what? Intermediate plasticity, medium plastic category. See, we have already discussed in the class that when the plasticity index is 0, PI is 0, the soil is called a low plastic category. If PI is in between 0 and 7, it is called as, if PI is 0, it is a non-plastic soil, है ना? PI 0 है तो non-plastic soil है. PI 0 to 7, low plastic category, 7 to 17, medium plastic category or intermediate categories, and more than 17,
comes under the high plastic organics. So this also we have discussed in the classes earlier. So this is about the Indian standard soil classification. Now we shall discuss about the next classification, which is called a Highway Research Board classification. See, earlier or in the beginning, in the year 1929, this classification system was called as AASSTO, American Association of State Highway and Transportation Officials, right? It was also called as Public Road Administration Classification System, right? In 1929. But later on, after several revisions, in the year 1945, it was called as Highway Research Board classification. After major revision, the name was changed. And this classification depends upon two things. One is the particle size composition and plasticity characteristics, right? Plasticity characteristics, दो चीज पर निर्भर करता है. And this classification, the name itself indicates highway research board classification. It is used for the highways, right? For the pavement construction, or highway engineers, normally highway engineers use this classification for the pavement construction. This classification system has been divided into 7 primary groups. 7 ग्रुप में बांटा गया है. जैसे this group has been designated as A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. We shall see in the table, right, later on. So group A1, further it has been divided into 2 subgroups, and A2 has been divided into 4 subgroups. See, another point is also there in this classification, a characteristics called group index, GI. GI, how we can calculate the GI, we shall also see the formulas. GI is used to describe the performance of the soil when used for pavement construction. GI के आधार पर भी soil की performance पता चलती है. Group index is not used to place a soil in a particular group, but is actually a means of rating the value of soil as a subgrade material within its own group. Higher the value of index, जितना GI की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही सॉइल वीक होगा, सबग्रेड मटेरियल पुअर होगा. जितना ही इसकी वैल्यू कम होगी, 0 हो जाए तो एक्सलेंट हम कहते हैं उसको, सॉइल की परफॉर्मेंस एक्सलेंट है. द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल, एज आई टोल्ड यू हियर, depends upon the amount of soil passing the 75 micron ISC, liquid limit and plastic limit. ये 3 चीज की अगर लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट कर लें तो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन उस सॉइल का कर सकते हैं. So these 3 things are important. Now we shall see group index. There is one formula to calculate the group index. The first the formula, what is the formula? GI is equal to 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD, right? This is the formula. Now we have to understand what is the meaning of A, C, B and D. इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग को समझना जरूरी है. A indicates whatever the soil we have for the analysis in the laboratories. What it said that the portion of percentage of soil passing 75 microsieve greater than 35, not exceeding 75. This is the condition. 35 से ज्यादा पास होना चाहिए. अगर 35 से ज्यादा पास हो रहा है और 75 के नीचे को हम लोग A वैल्यू कहते हैं. This value, how we can find out? 75 minus 35, 40. That means we can put the value of A 0 in between 0 and 40. We shall also discuss by using one example later on. B also depends upon the percentage of soil passing, but here condition is greater than 15 and not exceeding 55. So 55 minus 15 is equal to how much? 40. मतलब ये हुआ कि अगर 15 आता है तो 0 होगा B की वैल्यू. अगर 15 और 55 के बीच जो होगा तो 0 और 40 के बीच जो वैरी करेगा, यानी 55 minus 15 is equal to 40. That means the value of B varies in between 0 and 40. Now we can see the C depends upon the liquid limit of the soil. Greater than 40, not exceeding 60.
तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, यानी C की वैल्यू जो है 0 और 20 के बीच वैरी करेगी। जो ही सॉइल हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके एनालिसिस करते हैं और उसका लिक्विड लिमिट हम निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डी, दैट पोर्शन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यहाँ पीआई की जरूरत है। पीआई यू नो पीआई इज द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी। सो पीआई greater than 10 not exceeding 30, this is the condition we given. So 30 minus 10 is equal to 20. That means the value of D vary in between 0 and 20. इसके बीच vary करता है। Now we shall understand the table. We can see these two categories are here. Granular materials, we can associate coarse grain soil, and here silty clay materials, fine grain soil. But condition is 35% or less passing 75 micron C. इसको दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? More than 35% retaining on the 75 micron C. Here more than 35% is passing 75 micron C. So these two conditions are there. अब ये conditions आप देखिए, this condition is going to be divided into three parts, A1, A3, A2, and this is going to be divided in three categories, four categories, A4, A5, A6, A7. Group classification. Okay. Now we can see here the A1 group has been divided into further two subgroups, A1A, A1B, and here A2 in four subgroups, A24, A25, A26, A27. Here A7 has been further classified into two groups, A75, A76. Now whatever the soil we have taken for the analysis, as I told you, if the soil, right, the amount of soil or 35% or less passing, that means more than 35% retaining on the C, which C 75 micron IC, उस स्थिति में हम आगे क्लासिफाई करते हैं सी एनालिसिस, ओके। और दैट soil, whatever the soil has been retained on 35%, retained on the 75 micron C, और जो रिटेन किया है उस सॉइल को लेकर फर्दर हम सी एनालिसिस करते हैं, और सी एनालिसिस करने के बाद फिर इसको डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ बांटा गया है। देखिए सी एनालिसिस 2 mm ISC से अगर उसको पास कराते हैं तो 50% से अधिक नहीं पास होना चाहिए, तभी ये A1 A कैटेगरीज में वो सॉइल आएगा, राइट। 425 micron sieve, suppose you are going to use to sieve it, it should not pass more than 30%, then 30% maximum. 75 micron sieve 15% मैक्सिमम से अधिक पास नहीं होना चाहिए A1 कैटेगरीज के लिए। देखिए A1 ग्रुप के लिए, फिर उस तरह से A1B के लिए आप देखिए 425 माइक्रो सीव हैज बीन यूज्ड हियर, और यहाँ 75 माइक्रो क्लियर 25. Likewise, the groups category, the different classification has been given as per the sieve analysis. देखिए for all the three sieve analysis different values have been given. Here 75 microns, only this one values have been given for this 75 microns. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हम लोग देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 420 माइक्रोन सीव। आप जानते हैं कि जब भी लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं 425 माइक्रोन सीव से सीव किया हुआ सैंपल इस्तेमाल करते हैं और उसी से लिक्विड लिमिट निकालते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट is equal to plasticity index. So what it says that if plasticity index is 6, that comes under A1, right? A1 is maybe A1A or A1B, which, right, that depends upon the other points also. So 6 maximum, but in this category non-plastic. सवाल PI non-plastic है यानी 0 है, PI 0 है। उस तरह से लिक्विड लिमिट की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ है, इस कैटेगरी के लिए इतना दिया हुआ है, PI की वैल्यू 10 मैक्सिमम दिया हुआ है। तो सब कैटेगरीज के लिए लिक्विड लिमिट यहाँ और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है। नाउ वी कैन सी द ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स इज 0 है, कहाँ से A1 से लेकर के A2 तक हो, और A3 इट ऑल्सो इंक्लूड्स A3, 0 वैल्यूज है। देन फॉर दिस ग्रुप 4 मैक्सिमम 8, 12, 16, 20। यूजुअल टाइप ऑफ
सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट्स, उस सॉइल में क्या क्या हो सकते हैं इस कैटेगरी में, अगर ये कैटेगरी को मीट करता है, इस ग्रुप को मीट करता है, तो स्टोन, फ्रैगमेंट्स, ग्रेवल और सैंड हो सकता है। इसमें सिर्फ फाइन सैंड होता है। सिल्टी और ग्रेवल, सिल्टी, क्लेई और ग्रेवल एंड सैंड कैन बी हियर इन दिस ग्रुप. This group means A2 groups. Here in A4 and A5 silty soil, or A6 and A7 clay soils. Now generating depending upon the group index, we can say here excellent to good. कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रुप इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, जो फार्मूला दी हुई है, उस आधार पर अगर 0 आता है जीआई की वैल्यू, तो उसको हम लोग सॉइल को एक्सेलेंट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेलेंट कब कहेंगे? एक्सेलेंट कहेंगे यदि ये कैटेगरी के अंडर आता है तब। जैसे मान लीजिए कि 6 मैक्सिमम है या एन नॉन प्लास्टिक कैटेगरीज है, तो इसके आधार पर जो है एक्सेलेंट से गुड की तरफ होगा और फेयर टू पुअर हो जाएगा। यानी एज दी वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सो एक्सेलेंट टू पुअर, दिस सॉइल कैटेगरीज और सॉइल ग्रुपिंग वी कैन गेट, or soil group index also we can find out. So as I told you, with the required data in mind, whatever the data we have, data means the sieve analysis values, the liquid limit value, plastic limit value, through which you have determined the plasticity index. So left to right in the chart, correct group will be found by the process of elimination. जैसे डाटा के अनुसार, वैल्यूज के अनुसार हम टेबल से वैल्यूज को मैच कराते हैं और लेफ्ट से आगे दाहिने, लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते चले जाते हैं। किस ग्रुप में आता है, किस ग्रुप में आता है, ग्रुप इंडेक्स क्या है, उसके अनुसार उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ग्रुप फ्रॉम द लेफ्ट कंसिस्टेंट विद द टेस्ट डाटा इज करेक्ट क्लासिफिकेशन। ये ग्रुप, ये 7 ग्रुप इज एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है, ये 7.5 और ये 7.6, which depends upon plastic limit. If plastic limit is less than 30, then it is called as A76. If PL plastic limit is greater than equal to 30, it is called as A75. So now we shall see one example here. A sample of inorganic soil has the following grain size characteristics. Size दिया हुआ है 2 mm, 95% पासिंग और 75 माइक्रोन सिर्फ से कितना पास कर रहा है, 78% पासिंग। वी हैव सीन इन द मेन कैटेगरीज 35%, मोर देन 35% रिटेनिंग और लेस 35% पासिंग और मोर देन 35% पासिंग, दैट वी हैव सीन इन द HRB टेबल, राइट, 35% criteria and passing through the 75 micron sieve. So we shall use this value 75 micron sieve, 78% passing. और क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? लिक्विड लिमिट इज 50%, PI is 24%. So classify this soil according to HRB classification system. So now what we shall do here, percent soil passing 75 micron, 78% is already given here. And if we are going to denote this value P by percent passing, P is the percent passing we are doing. Equation we have already seen the group index equation. GI, what is the value? What is the equation for GI? So AI, we have seen the categories greater than 35 but not exceeding 75. So 75 minus 30 is 40. अब यहाँ देखिए परसेंट पासिंग जो है आपका 78 दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 75 से अधिक हम नहीं यूज कर सकते, विच इज मोर देन 75, 78 75 से ज़्यादा है, इसलिए लिमिट हम लोग कर देते हैं 75 की और ए की वैल्यू 40 हम लोग यूज करें, 75 माइनस 35। उस तरह से बी के लिए देखें, बी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन परसेंट ऑफ सॉइल पासिंग। सो 78% पासिंग दिया हुआ है, तो बट कंडीशन क्या है कि 55% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए 55 ही कंडीशन हम लोग रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे, राइट। 55 माइनस 15 इज इक्वल टू बी वैल्यू क्या होगी 40। सी डिपेंड्स अपॉन लिक्विड लिमिट। द कंडीशन क्या है कि लिक्विड लिमिट मिनिमम वैल्यू 40 एंड मैक्सिमम 60, बट इन आवर न्यूमेरिकल्स इट इज गिवन देयर 55%। सो 55 minus minimum value 40, we shall use
एंड सी 15 5 माइनस 40 इक्वल टू 50, तो सी की वैल्यू 15 हो जाएगी। दूसरा डी ऑल्सो डी डिपेंड्स अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो डी यहाँ क्या है, डी का लिमिट क्या है, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 30 है, लेकिन हमारा वैल्यू 24 दिया गया है, तो 24 माइनस 10 यानी 14 होगा, यानी डी की वैल्यू 14 हो जाएगी। So now what we shall do, the A, B, C, D value we shall incorporate in this equation and we shall calculate it. Finally, GI value 70, group index value we are going to get 70. So now we can see, and we can also keep in our mind the HRV classification chart, that means table, right? So based on the data and the table, let us see now based on the percentage of fine grained soil passing 75 microseep, 78% पास कर रहा है। 78% पास कर रहा है, इसका मतलब सेकंड सिल्ट एंड क्ले कैटेगरीज में ये जाएगा, क्योंकि वहां कैटेगरीज क्या है कि मोर देन 35% पासिंग थ्रू दिस 75 माइक्रोन सीप। तो मोर देन 35% पासिंग का मतलब यहाँ देखिए 78% पास कर रहा है, यानी हम लोग का कैटेगरी पहले ही जो है, अगर टेबल देखें A4 से लेकर के A7 के बीच कहीं होना चाहिए। तो उस कैटेगरी में ये बताता है कि 78% यानी A4 से A7 कैटेगरी में आएगा। आगे देखें हम लोग, लिक्विड लिमिट इज 55%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 24%। आप जानते हैं कि नीचे उस टेबल के रोज में लिक्विड लिमिट भी दिया हुआ है, पीआई भी दिया हुआ है और ग्रुप इंडेक्स वैल्यू भी दिया हुआ है। तो ये तीनों वैल्यू का इस्तेमाल करें, इससे तो हमको पता चल गया कि A4 से A7 के बीच में होगा। अब उसमें कौन होगा, ये लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ग्रुप इंडेक्स वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो ग्रुप इंडेक्स 17 है, विच इज मोर देन ग्रुप A6। A6 का में ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 16 दी हुई है, तो उससे 17 ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं A7 ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन फर्दर A7 ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, A75 एंड A76। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिक, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ दिस फायर। सो PI हम जानते हैं, हाउ वी कैन वर्क आउट, PI इज इक्वल टू LL माइनस PL, तो PL इज इक्वल टू LL माइनस PI। तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग LL लिक्विड लिमिट दिया हुआ 55, PI 24 दिया हुआ है, 31 विच इज ग्रेटर देन 30। तो हम लोग कंडीशन जानते हैं कि यदि PI अगर 30 से ज्यादा है, 31 आ रहा है, तो ये 75 कैटेगरी। व्हाट विल बी द आंसर, दिस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज A75। तो हम लोग ग्रुप को ऐसे लिखते हैं A75 और ग्रुप इंडेक्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल व्हिच वी डिस्कस नाउ। So this is all about your today topic. Thank